Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Question number 4. In figure, if lines PQ and RS intersect at point T, ये दोनों लाइन्स अगर T पे इंटरसेक्ट करती हैं, such that angle PRT is equal to 40, RPT is 95 and TSQ is 75, you have to find angle SQT. SQT की वैल्यू निकालनी है. So first of all, in triangle PRT, अब PRT ट्राइंगल के अंदर एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल PTR is equal to 180. So this is because of the angle sum property of a triangle. 95 plus 40 plus angle PTR is equal to 180. So PTR is equal to 180 minus 95 minus 40 degree, that is 45 degree. ये होगी इक्वेशन नंबर 1. So first angle हमने निकाल लिया. Now we have angle STQ equal to angle PTR, क्योंकि ये दोनों vertically opposite angles है. So अगर PTR 45 डिग्री है, so STQ भी 45 डिग्री होगा. So we can say that angle STQ is equal to angle PTR, which is ultimately equal to 45 degree. This is equation number 2. अब same तरीके से if we take another triangle TSQ triangle में you have angle STQ plus angle S plus angle TSQ equal to 180. इसमें भी अगर हम देखें तो एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. नाउ वी हैव 45 डिग्री प्लस 75 प्लस एंगल TSQ इक्वल टू 180. सो एंगल TSQ इज इक्वल टू 180 माइनस 45 एंड 75 का एडिशन. सो दैट इज 180 माइनस 120 व्हिच इज इक्वल टू 60 डिग्री.